Hi friends, welcome on YourPedia, the platform which provides you, largest platform which provides you the mentoring, guidance, counseling post GATE. GATE is one of the very prestigious exam friends. जो आप engineering graduates हैं, pharma के graduates हैं, science graduates हैं, they write GATE exam for two objectives, two purpose. One is to get into higher educational courses in India and abroad, in Singapore and Europe. Germany, we have some universities which on the basis of the GATE score can induct you. And the second is in India, obviously reputed institute जितनी भी हैं, IITs, IIScs, NITs, वहाँ पे GATE के through higher education में जाते हैं. And another reason is public sector. So many of you aspire to get into public sector also through GATE. अब ये सच है कि पब्लिक सेक्टर कुछ इसमें से बाहर निकल रहे हैं, जैसे IUCL, HPCL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऐसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये अलग से अपना एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं एंड यू आर डूइंग इट. बट स्टिल देयर आर सो मेनी पब्लिक सेक्टर विच स्टिल आर रिक्रूटिंग थ्रू GATE, लाइक पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन स्टिल इज रिक्रूटिंग थ्रू GATE एंड अदर many other public sectors are recruiting through GATE only. So the best is like you are writing GATE and you are writing other exams also, and till you get the finally some job in public sector or government job which you are aspiring, तब तक आप अच्छी तैयारी करते रहें. No doubt preparation of CBT of one PSU is different from the CBT of another PSU, is different from GATE exam that is there, but knowledge and component, knowledge and content is same. Like suppose you are mechanical engineer and आपने exams की तैयारी करना start किया, तो आपको thermodynamics तो पढ़ना पड़ेगा. Knowledge of thermodynamics you need to have as a subject. अब questions GATE में अलग तरीके का आएगा, बेल में अलग आएगा, HPCL में अलग आ सकता है. Difficulty level can be different. One liner question can be different, numericals or theory that can be different. So there can be difference in difficulty level of the questions, number of questions, time you get, negative marking from one exam to another, but knowledge part to same hai. So if you are writing GATE exam and if you are preparing for other PSUs, that is a good strategy, like to get into the job, and that is how it should be done. तो क्या PSUs GATE से बाहर निकल रहे वो अच्छी चीज है? आंसर है ठीक है, मतलब बैलेंस होना चाहिए. इट शुड नॉट बी दैट ऑल द PSUs आर रिक्रूटिंग थ्रू GATE. दैट इज नॉट गुड, बिकॉज GATE एग्जाम हर किसी को नहीं जमता. GATE एग्जाम हायर एजुकेशन के लिए भी होता है. IITs आर सेटिंग द GATE एग्जाम, प्रोफेसर्स आर सेटिंग द पेपर. सो प्रोफेसर्स आर आस्किंग दोज क्वेश्चंस आल्सो व्हिच आर रिसर्च ओरिएंटेड क्वेश्चंस. सो PSU की शायद रिक्वायरमेंट वो नहीं है. PSU की रिक्वायरमेंट may not be research oriented in depth question. When HPCL is hiring mechanical engineer for marketing job, then what HPCL is to do with the research related questions, right? So आपको रिक्वायरमेंट अलग है PSU का, so exam should also be different. That is what I strongly believe. अब 2026 में एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है IIT गुवाहाटी, एंड IIT गुवाहाटी ने लास्ट टाइम करवाया था 2018 में. ये 7 IITs जो हैं पुराने, जिनमें IISc भी आता है, IISc बेंगलोर, रुड़की, कानपुर, खड़गपुर, बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, these are the IITs which conduct the exam. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे 2026, 2025 रुड़की, बेंगलोर, कानपुर, खड़गपुर, बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास एंड गुवाहाटी. उससे पहले रुड़की, अब अगली बार मेरे ख्याल से वो मद्रास आ जाएगा. तो ऐसे साइकिल चलता है. एवरी IIT 1 by 1, year by year, ये ओल्ड IITs इंक्लूडिंग रुड़की एंड IISc बेंगलोर आर कंडक्टिंग दीज एग्जाम्स ऑफ GATE. नाउ 2014 में ऐसा हुआ था दैट 10 लाख प्लस कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड फॉर एग्जाम. आई एम नॉट सेइंग अपीयरिंग, रजिस्टर्ड फॉर एग्जाम्स. अपीयरिंग उससे कम होते हैं. द नंबर यू कैन सी हियर, एंड नाउ इट इज लुकिंग लाइक डाटा इज नॉट देयर. आई एम स्टिल सेइंग, यू डोंट क्रिटिसाइज मी कि सर डाटा तो अभी आया नहीं. यस, IIT गुवाहाटी ने अभी डाटा नहीं दिया है, लेकिन देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी मतलब दिख ही रहा है वो कि 10 लाख से ज्यादा लोगों ने भरा होगा. उसके रीजंस हैं. रीजंस आर प्लेसमेंट्स आर नॉट देयर इन द कैंपसेस, and maximum number of candidates, the number which is increasing is of computer science. If you go back to 2014 or 15 or 16, mechanical engineers used to write the maximum number, used to be that of mechanical engineers, civil engineers, electrical engineers, and computer science used to be towards the end. Now what number we are getting is कि maximum number is computer science. If 9.36 lakh are or 7.47 lakh candidates are writing this exam, the 2 lakh are from computer science. Why? Because पिछले कुछ टाइम से क्या हुआ, everybody started taking computer science and IT, and now jobs are not there in the market, so everybody started writing a GATE. That is how it has happened. But now why I am showing you this data again, friends, is that yes, people are writing GATE, and I strongly believe that
if you write GATE, you should give this exam very carefully, and you should prepare nearly nicely and then go for this exam. And the moment फरवरी में आपका एग्जाम होता है, then choose the courses accordingly, because you can get opportunities through these courses, and higher education की भी opportunities होती हैं. Many of my students who do masters from IITs, from good courses, they get very good salaries in PhDs and PhD jobs, and they go abroad. तो इंटरनेशनल मार्केट एक्सप्लोर करने का इससे अच्छा तरीका नहीं है. इफ यू वांट टू गो अब्रॉड विद फंडिंग, विद स्कॉलरशिप, देन राइटिंग गेट इन इंडिया एंड परसुइंग मास्टर्स इन इंडिया, MS M.tech के लिए आपका गेट स्कोर ज़्यादा हो सकता है, लेकिन MS के लिए कम गेट स्कोर रिक्वायर्ड है. एंड MS इज द बेस्ट डिग्री और द कोर्स to go for PhD later on. So if you want to project yourself in other countries like Europe, America, or other countries, Australia and all, this is also one good strategy. So I am making this video in the month of November, last week of November. You have December, you have January, 2 months are left. Just give your 100% so that you pass this exam. The moment you pass this GATE exam, this data is there, you can see this data. So the moment you pass this exam, and if your CGPA is good, you can land up in IIT merely by passing GATE. And if your CGPA is 7.5 plus, you can take some course in IIT in MS M.tech research, which is called. I'll discuss with you once your exam is over. So you have option. यही वो 2 मंथ होते हैं जिसमें students start feeling that okay, मेरी तैयारी नहीं हो रही है, I'm not preparing good, what should I do? Just don't think about that. अपना सारा pressure, सारे tension किनारे करके prepare properly so that you can pass this exam. 35-40 नंबर minimum आप लें. The moment you pass this exam, you have the passport or ticket for getting into IIT system. And once you go to IIT system, then you can think of going abroad and getting into good jobs, or in India also getting into good jobs. This is how, friends, you have to proceed forward. So yes, if you see this data, so ये start हुआ था 9.22 लाख तक मैंने 2017 में दिखाया है, फिर बहुत ही कम हो गया 2023 में जब प्लेसमेंट्स वर गोइंग गुड, तो ये बहुत ही कम हो गया. अभी दोबारा बढ़ना स्टार्ट हुआ, और इस बार 2026 में पहली बार 2014 में हमने देखा था ये नंबर 10 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड हुआ था. अब पहली बार हम देखेंगे 10 लाख से ऊपर ये नंबर आपका हिट होगा. सो दैट इज हाउ इट इज़ देयर. एंड कंप्यूटर साइंस का सबसे ज़्यादा होगा. सो गियर अप, तैयारी अच्छी करो, कंपटीशन हो सकता है. टू गेट इनटू IIT इज ऑल्सो देयर कैन बी कंपटीशन, बट YourPedia आपको उसमें हेल्प करेगा. थैंक यू.